डायबिटीज डायबिटीज mellitus diabetes mellitus type 2. What are the treatment? In pre-diabetic those aged 25 से लेकर के 59 years with body mass index that is BMI greater than equals to 35 kg per meter square, higher fasting plasma glucose that is FPG, fasting plasma glucose FPG example greater than equals to 110 mg per dl and higher glycated hemoglobin जिसको बोला जाता है HbA1c higher glycated hemoglobin HbA1c example greater than equals to 6.0% and in women with prior gestational diabetes mellitus that is gestational diabetes mellitus GDM start metformin acarbose can also used to delay the onset of diabetes. Acarbose can also be used to delay the onset of diabetes. Monitor yearly for the development of diabetes mellitus. Monitor yearly for the development monitor yearly for the development of diabetes mellitus DM. ओके प्री डायबिटिक हो गया. प्री डायबिटिक का कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि एज ग्रुप किस में होना चाहिए? 25 से लेकर के 59 होना चाहिए, पहला कंडीशन.
दूसरा कंडीशन आपका बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो आपका कितना आना चाहिए, BMI का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 kg/m² होना चाहिए। फास्टिंग, हायर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो होता है, थर्ड नंबर पर हायर फास्टिंग, हायर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, प्लाज्मा ग्लूकोज जो लेवल होता है जिसको हम फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज FPG कहा जाता है, वो कम से ग्रेटर देन आना चाहिए 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नाउ उसके बाद ग्लाइकेलेटेड हेमोग्लोबिन नंबर 4, हायर ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन जिसको हम बोला जाता है HbA1c। ये आपका आना चाहिए जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6.0%। तो एंड इन ओमेन विथ प्रायर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, तो इस क्षेत्र में हम क्या दे सकते हैं, मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। प्री डायबिटिक पेशेंट का कंडीशन ही है, मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, उसके साथ आकार बोझ भी हम दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हो गया हमारे लिए इन डायबिटिक पेशेंट, if there are no specific indication for starting a drug and if the patient is highly motivated, तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन 3 मंथ के लिए होगा। उसके बाद ऑप्टिमाइज वेट, डाइट कंट्रोल इसमें रहेगा जिसमें हम रेस्ट्रिक्ट कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कैलोरीज, सैचुरेटेड फैट एंड सिंपल शुगर, increase vegetable intake and fruits, not fruit juice। उसके बाद एक्सरसाइज, brisk walking at walking speed greater than equals to 4 km/h. Walking speed was defined as easy walking speed was
डिफाइंड आज इजी और कैजुअल, वो कितना होना चाहिए? तो हमारे पास इजी या फिर कैजुअल, कैजुअल कैजुअल वो कितना होना चाहिए? लेस देन 3.2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद एवरेज या इसे नॉर्मल भी बोला जाता है, एवरेज या फिर नॉर्मल, ये कितना होना चाहिए? 3.2 से लेकर के 4.8 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। फेयरली ब्रिस्क, फेयरली ब्रिस्क ये आपका होना चाहिए 4.8 से लेकर के 6.4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद ब्रिस्क, BRISK ब्रिस्क, और स्ट्राइडिंग, STRIDING स्ट्राइडिंग। तो स्ट्राइडिंग हमारे पास कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 6.4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होना चाहिए। एंड ये सभी चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150 मिनट पर वीक में होना चाहिए। 150 मिनट पर वीक आपका एक्सरसाइज होना चाहिए ऑफ मॉडरेट टू vigorous exercise we are able to significantly reduce microvascular complication including retinopathy. Now, then psychological intervention, ये आपको भी करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन आपको करना पड़ेगा। vigorous cardiac risk reduction, vigorous cardiac risk reduction, smoking cessation. Number one, smoking cessation, smoking cessation इस vigorous cardiac risk reduction कैसे करोगे? स्मोकिंग सेसेशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, reduction in serum lipid with a statin, reduction in serum lipid with a statin, डाइट कंट्रोल इसमें रहेगा, एक्सरसाइज रहेगा, एंड वेट लॉस और मेंटेनेंस, वेट लॉस रहेगा, मेंटेनेंस, देन उसके बाद लो डोज
aspirin. Number 2, low dose aspirin, low dose aspirin, low dose aspirin, low dose aspirin for patient, low dose aspirin for patient with atherosclerotic, ATHERO, atherosclerotic, SCLEROTIC, low dose aspirin for patient with atherosclerotic cardiovascular disease, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक मतलब एएस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एएससीवीडी, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और आफ्टर शेयर्ड decision making, keep blood pressure less than 140 से लेकर के 90 मिलीमीटर पर HG एंड लेस देन 130 से लेकर के 80 mmHg in cardiac risk patient, self care measure, aloe vera gel, cinnamon, fenugreek, garlic, and Nigella sativa seed are the herbal medicine that reduce A1C in type 2 diabetes mellitus. If not at diagnosis, initiate pharmacotherapy. Number 1, lifestyle modification in all. Lifestyle modification in
all. Pharmacotherapy based on HbA1c. Pharmacotherapy based on HbA1c less than 9% monotherapy with metformin if there are no compelling indication for other drug, and contraindication for metformin. Contraindication for metformin. 9 से लेकर के 10% इसमें हम क्या करेंगे, डुअल थेरापी देंगे। डुअल थेरापी इसमें मेटफॉर्मिन के साथ एडिशनल ड्रग देंगे। एडिशनल ड्रग जय गुरुदेव। more than 10% ट्रिपल थेरापी जिसमें हम मेटफॉर्मिन +2 एडिशनल एजेंट देते हैं। मेटफॉर्मिन +2 एडिशनल agent. After 3 months, check HbA1c and if target is not achieved, assess compliance. Consider moving to the next step, that is from monotherapy to dual, triple, and lastly combination of injectable therapy. इंजेक्टेबल थेरापी देने के बाद if after 3 months HbA1c is controlled
at any step, then continue with the treatment. With the treatment. Combination injectable therapy. Combination injectable therapy. हे भगवान. Combination injectable therapy. Combination injectable therapy. If HbA1c is not controlled, move to either of the three boxes given below. If HbA1c is not controlled, move to either of the three boxes given below. Okay. If HbA1c is not controlled, move to either of the three boxes given below. Number 1. यहाँ पर एक कलम करेंगे, इधर एक कलम करेंगे. Add glucagon like peptide agonist. Add glucagon like peptide. Add glucagon like peptide, जिसको हम कहते हैं GLP-I. Glucagon like peptide I agonist. If target is not reached, if target is not reached, if no response change as arrow direct. Number 1. Add rapid insulin. Add rapid insulin before largest meal. Before largest meal. 4 unit or 0.1 unit per kg or 10% basal insulin. Basal insulin. Increase or decrease dose
इंक्रीज और डिक्रीज डोज बाई 1 से लेकर के 2 यूनिट और 10 से लेकर के 15% वंस और ट्वाइस वीकली टिल 10 से लेकर के 15% वंस और ट्वाइस वीकली टिल टारगेट सेल्फ मॉनिटरिंग blood glucose, that is self monitoring blood glucose SMBG is reached. हो गया काम। अगर ये नहीं होगा तो ये करोगे। चेंज टू प्री मिक्स इंसुलिन, changed to pre-mixed insulin, changed to pre-mixed insulin BD dose दिन में 2 बार BD dosed divide current basal dose into 1/3 or half AM and half PM. Increase or decrease dose by 1 से लेकर के 2 यूनिट और 10 से लेकर के 15% once or twice weekly till target self monitoring blood glucose जिसका फुल SMBG is reached. Initial basal insulin usually with metformin प्लस और माइनस, या तो हम ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, ठीक है, प्लस और माइनस अदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, अदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जिसको बोला जाता है OHA, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। स्टार्ट 10 इनिशियल basal insulin, ओके,
4 यूनिट दोगे, 8 रैपिड इंसुलिन बिफोर लार्जेस्ट मील। ओके, स्टार्ट करिव 10 यूनिट पर डे या फिर 0.1 से लेकर के 0.2 यूनिट पर केजी पर डे। एडजस्ट 10 से लेकर के 15% और 2 से लेकर के 4 यूनिट वंस और ट्वाइस वीकली to reach target fasting ब्लड शुगर, जिसको हम FPS कहते हैं। डिक्रीज डोज इज बाई 4 यूनिट। डिक्रीज डोज इज बाई 4 यूनिट और 10 से लेकर के 20%। If goals are not met after 3 months, consider changing to alternative insulin regimen given below. If goals are not met after 3 months, consider changing to alternative insulin regimen given below. If goal is not reached, change to सो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या चेंज करेंगे? add to rapid acting insulin before meal, dose same as in the given box. Dose same as in the above box. राइट हैंड साइड में क्या चेंज करेंगे? चेंज टू प्री मिक्स्ड एनालॉग इंसुलिन थ्राइस डेली। चेंज टू प्री मिक्स्ड एनालॉग इंसुलिन thrice daily, breakfast, lunch, dinner. First line therapy.
फर्स्ट लाइन थेरेपी। Depends on comorbidities, patient-centered treatment factor, patient-centered treatment factor, and management needs, and generally include metformin plus lifestyle modification. Metformin and lifestyle, नहीं आउट के जाओ, lifestyle modification. Consider glucagon like peptide 1 receptor agonist. Consider glucagon like peptide 1 receptor agonist, sodium glucose co-transporter 2, sodium glucose co-transporter 2, जिसे हम बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज co-transporter 2, सोडियम ग्लूकोज GL ग्लूकोज, co-transporter मतलब T, SG सोडियम ग्लूकोज, SGLT2 inhibitor with or without metformin, with or without metformin, for initial therapy in diabetes, with or therapy in diabetes with or high risk for ASCVD का मतलब क्या होता था? ASCVD कहाँ गया? ASCVD मतलब atherosclerotic cardiovascular disease.
हार्ट फेल्योर, इनिशियल थेरापी इन डायबिटीज with or high risk for atherosclerotic cardiovascular disease, heart failure, and chronic kidney disease. That is chronic kidney disease मतलब CKD. Consider yearly initiation of insulin in the following scenario. Consider yearly initiation of insulin in the following scenarios. Evidence of ongoing catabolism. Number 1, evidence of ongoing catabolism, जिसमें वेट लॉस होता है. सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया. Symptoms of hyperglycemia. Consider yearly initiation of insulin in the following scenario. Evidence of ongoing catabolism, weight loss लगातार हो रहा है. सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया के सिम्टम आ रहा है. ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं HbA1c, इसका लेवल ग्रेटर देन 10%, जो कि आपका आएगा 86 मिलीमोल्स पर मोल. मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं क्या, मिलीमोल फिर मोल. ओके, देखते हैं. फास्टिंग ब्लड शुगर greater than 250 mg per dl and random blood sugar RBS greater than 300 mg dl, जो कि आपका 16.7 मिलीमोल्स पर लीटर. कीटोन्यूरिया, उसके बाद आप क्या करोगे, रीअसेस एवरी 3 to 6 month एंड एडजस्ट ड्रग एज नीडेड. रीअसेस every 3 to 6 month and adjust drug as needed. OHA का क्या फुल फॉर्म था?
ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या कुछ और, कहाँ पर वो इच्छे था, अभी अभी पढ़ा था। हाँ, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है। बाइगुआनाइड मेटफॉर्मिन, बाइगुआनाइड, फर्स्ट लाइन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, फर्स्ट लाइन oral hypoglycemic agent in type 2 diabetes mellitus as monotherapy. Prior to start metformin, prior to start metformin, do serum creatinine, do serum creatinine with estimated glomerular filtration rate, that is estimated glomerular EGFR, estimated glomerular filtration rate. Liver function test, HbA1c, available brand, भगवान, available brand, Obimet, glyciphage, glucophage, 500 मिलीग्राम में आता है, 850 में आता है, 1000 mg टैबलेट में भी आता है। मेटफॉर्मिन एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट taken once daily, with the evening meal is available in 500 and 850 mg. Begin with immediate release tablet, 500 mg OD
with the evening meal and if tolerated and add a second 500 mg dose with breakfast. The dose can be increased slowly, one tablet every 1 to 2 weeks. The dose can be increased slowly, one tablet every 1 से लेकर के 2 week until reaching the usual effective dose, that is 2000 mg per day. मेटफॉर्मिन की बात हो रहा है, बाइगुआनाइड डेरिवेटिव होता है एंड ये आपका मैक्सिमम डोज भी होता है within 1 to 2 months. So the dose can be increased slowly, one tablet every 1 से लेकर के 2 week until reaching the usual effective dose 2000 mg per day, जो कि maximum dose होता है within 1 से लेकर के 2 month. within 1 से लेकर के 2 month. नाउ मॉनिटरिंग हमें क्या क्या रखना होगा, मॉनिटर क्या क्या करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग पैरामीटर में HbA1c every 3 to 6 month, every 3 to 6 month करना पड़ेगा। सेरम क्रिएटिनाइन ईयरली करना पड़ेगा। सेरम क्रिएटिनाइन आपको ईयरली करना पड़ेगा। विटामिन B12 का चेकअप, विटामिन B12 ईयरली करना पड़ेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रोफाइल अगर हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन को, कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे EGFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यस, EGFR अभी पढ़ा था, कहाँ गया अभी? EGFR अभी कहीं पर पढ़ा था। ओके, serum creatinine with estimated glomerular filtration rate. ओके, एस्टिमेटेड, ई मतलब एस्टिमेटेड। ओके, EGFR एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका बिलो आना चाहिए। EGFR बिलो 30 ml per minute per 1.73 meter square,
नंबर 2, अगर EGFR का वैल्यू बिलो 30 ml/min पर 1.73 मीटर स्क्वायर आ रहा है तो मेटफॉर्मिन आपके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा। इम्पेयर्ड हेपाटिक फंक्शन, इम्पेयर्ड हेपाटिक फंक्शन, तो इसमें एक्टिव अल्कोहल, अगर आपका किडनी लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक्टिव अल्कोहल अब्यूज, तो इसमें अल्कोहल आप नहीं ले सकते हो। अगर ले रहे हो एक्टिव अल्कोहल आप लगातार कर रहे हो तो फिर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा। अनस्टेबल और acute heart failure at risk of hypoperfusion, okay, unstable or acute heart failure at risk of hypoperfusion, perfusion, unstable acute heart failure at risk of hypoperfusion, तो कंट्राइंडिकेटेड है। सीवियर हाइपोक्सीमिया, नंबर 4, सीवियर hypoxemia due to infection and other cause, due to infection and other cause। नोट करने वाली बात क्या है? मेटफॉर्मिन डिक्रीजेस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, metformin decreases low density lipoprotein cholesterol, that is LDL, low density lipoprotein cholesterol, LDLC, by suppressing metformin decreases low density lipoprotein cholesterol by suppressing PCSK9 expression, by suppressing PCSK9 suppression। हमारा ग्लेनमार्क was max thingy। Thanks for watching।